Hello dear students, welcome to my video lecture. In today's video lecture, I will explain fourth method for solving first order differential equation, that is modified Euler's method. तो जैसे कि हमने प्रीवियस 3 मेथड सीखी है, पिकार्ड्स मेथड, देन रुंज-कुट्टा fourth order method, and third was Taylor's method. Now fourth method is modified Euler's method. So यहाँ पर भी आपको कुछ जो फॉर्मूले है वो आपको याद करने होंगे. So let us see the working procedure, how to use this modified Euler's method. So here we consider the first order differential equation dy by dx equals to f of xy with initial conditions y equals to y0 and x equals to x0, and additionally value of h will be given. H means step, okay, step taken in increment of x. Okay, so here h will be given. So here in very first step we find value of x1 y1. जैसे कि आपको इनिशियल कंडीशन से इजीली यू कैन आइडेंटिफाई वैल्यू ऑफ x0 एंड y0. नेक्स्ट स्टेप में हम सडनली क्या फाइंड करेंगे, x1 एंड y1. सो x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h. h कहां से लेंगे आप, फ्रॉम गिवन डेटा. Second, we find y1 having formula y0 plus h times f of x0 y0, और f of xy आपको कहां से मिलेगा, from given differential equation. Okay, after getting this x1 and y1 we start approximations. So for first approximate value of y, here we find first approximate value of y. तो जैसे कि हमने यहाँ पर x1 y1 फाइंड किया था, so for first approximation here we use notation y1 upper suffix 1. It denotes first approximate value. Okay, so formula is y0 plus h by 2 into f of x0 y0 plus f of x1 y1. x1 y1 means we use this value for finding this f of x1 y1. So this is your first approximate value. Now for second approximate value, so second approximate value के लिए सिर्फ आप यहाँ पर y1 को अपर सफिक्स 2 लगा देंगे, एंड फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ पर जो y1 था, अब y1 की जगह पर, जैसे कि हमने देखा है कि all these are iterative methods. Iterative methods means we can use previous value in next iteration. So definitely in second iteration, instead of this y1 we use y1 upper suffix 1. Okay, and that's why this formula is like this, y1 upper suffix 2. That means second approximation formula is y0 plus h by 2 into f of x0 y0 plus f of x1 y1, और यहाँ पर हम वैल्यू यूज करेंगे, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी, so we use this value here. Okay, और अगर आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन लेना है तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए सेम फॉर्मूला आएगा, दैट इज y1. थर्ड अप्रोक्सीमेशन आपको यहाँ पर मिलेगा y0 प्लस h by 2 इंटू f of x0 y0 प्लस f of x1 y1, बट आप यहाँ पर प्रीवियस इटरेशन की वैल्यू कंसिडर करेंगे, दैट इज y2. दिस इज सेकंड अप्रोक्सीमेशन. एंड वी कंटिन्यू दिस प्रोसेस. कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक आपका सॉल्यूशन, आपको जब तक सॉल्यूशन सेम नहीं मिलता अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस और अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस. मीन्स अगर आपको y1 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और y1 थर्ड अप्रोक्सीमेशन, इन दोनों की वैल्यू अगर सेम मिलती है, देन यू स्टॉप परफॉर्मिंग approximations. Okay, so in this way we continue this process till there is no difference between previous approximation and current approximation. Okay, so this is all about Euler's modified method, or you may say modified Euler's method. But remember, once I repeat this procedure, so first of all we find x1 y1. Afterwards फर्स्ट इटरेशन के लिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे. ओके, सेकंड इटरेशन के लिए सिर्फ क्या चेंज होगा, दिस y1 इज रिप्लेस बाय y1
फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1, ठीक है। अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए आप क्या करेंगे, y1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 को रिप्लेस कर देंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1। थर्ड में क्या करेंगे आप, थर्ड में हम इसे रिप्लेस कर देंगे। सो लाइकवाइज वी रिप्लेस वैल्यूज ऑफ दिस y1। ओके, so this is all about Euler's modified method. Now here I take a few examples of this method. Solve dy by dx equals to x plus y with x0 equals to 0, y0 equals to 1 by using Euler's modified formula. For x equals to 0.1 by taking h equals to 0.05. So first of all we write the given data. So here we have given dy by dx equals to x plus y, and here we compare it with f of xy, and hence our f of xy is x plus y. I denote the equation number 1. Now we write given initial condition. So given x0 equals to 0 and y0 कितना है 1, and further here h is provided. मे भी आपको h किसी क्वेश्चंस में h नहीं दिया रहता, तो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि हाउ टू फाइंड h. सो h फाइंड करने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, आपको यहाँ पर जो सोल्यूशन है, सो हियर इट इज आस्क्ड टू फाइंड सोल्यूशन फॉर x इक्वल्स टू 0.1, राइट। फॉर x इक्वल टू 0.1 हमें सोल्यूशन फाइंड करना है, और x0 कितना है, x0 इज 0। तो यहाँ पर आपको स्टेप दी हुई है। सो फर्स्ट स्टेप में जनरली हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं x0 प्लस h के लिए, x0 प्लस h के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर x0 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस h इज 0.05। तो आपको जो फर्स्ट इटरेशन थी उसमें सॉल्यूशन मिलने वाला है फॉर 0.05, बट यहाँ पे तो आपको सॉल्यूशन 0.1 के लिए पूछा है, और फर्स्ट इटरेशन में आपको सॉल्यूशन x इक्वल टू 0.05 के लिए मिल रहा है। मीन्स here definitely we perform 2 iterations. हमें 2 iterations यहाँ पर परफॉर्म करने होंगे। तो अगर आप सेकेंड इटरेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा 0.05 प्लस अगेन वी टेक स्टेप ऑफ 0.05, और इनकी एडिशन हमें मिलती है 0.1। मीन्स डेफिनेटली हियर we are going to perform 2 iterations। ओके, और इन केस आपको यहाँ पर h की वैल्यू अगर नहीं गिवन रहती, सपोज h अगर आपको नहीं दिया रहता, तो इन दैट केस व्हाट हैपन, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते थे, तो यहाँ पे हमें x0 की वैल्यू दी हुई है 0, और जो y की वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज फॉर 0.1। तो यहाँ पे आपका h रहता था, h विल बी x माइनस x0, तो x कितना है 0.1, x0 कितना है 0, so in this case your value of h will be 0.1, ठीक है। तो h कितना रहता था आपका 0.1। तो in this case you perform only 1 iteration, ठीक है। बट अगर आपको h की वैल्यू अगर गिवन है तो accordingly you can perform number of iterations। Okay, so as here value of h is provided, that's why here we perform 2 iterations। Now we start our solution। So यहाँ पर हमें फाइंड करना है, so to find y at 0.1 we perform 2 iterations। Okay, now in first iteration के लिए मैंने यहाँ पर a लिखा है। सो नाउ वी अप्लाई यूजुअल मेथड ऑफ यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो जनरली हम यूलर्स मॉडिफाइड में क्या करते हैं, इनिशियली वी फाइंड x1 एंड y1। तो x1 कैसे फाइंड करते हैं हम, तो x1 इक्वल्स टू x0 प्लस h, x0 इज 0, h इज 0.05।
सो x1 की वैल्यू हमें मिलती है 0.05. देन y1 फॉर्मूला इज y0 प्लस h into f of x0 y0. So y0 is, value of y0 is 1 plus h is 0.05 into f of x0 y0. x0 is 0, y0 is 1. So f of 0, 1. Okay. Now we calculate this y1. So y1 is equals to f of xy फंक्शन क्या है 0 सॉरी x प्लस y. तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 प्लस 1 इज 1. ठीक है. सो हमें मिलेगा 1 प्लस 0.05 इंटू 1 दैट इज 1.05. दिस इज वैल्यू ऑफ y1. ओके. एंड x1 इज 0.05. Now we apply Euler's modified formula. So using Euler's modified formula, so by modified Euler's formula, your first approximate value of y1 will be, so formula is y0 plus h by 2 into f of x0 y0 plus f of x1 y1. This is your first approximation, which is equals to y0 is 1 plus h is 0.05 upon 2. Then f of 0,1 plus f of x1 is 0.05 and y1 is 1.05. And accordingly we calculate this f of xy. f of xy क्या होता है x plus y. So यहाँ पर हमें मिलेगा 1 plus 0.05 upon 2, या तो फिर आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 0.0025. Then 0 plus 1 कितना मिलेगा 1 plus 0.05 plus 1.05 is 1.1. Okay. And after calculation here we get first approximate value of y, that is 1.0525. This is first approximate value of y1. Now we perform second approximation. I am talking about approximation. और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर नंबरिंग मेंशन किया है that is iteration. Okay, here we are performing first iteration, but यहाँ पर हमने second approximation लिया है. ठीक है. Now second approximation के लिए हम लेंगे फॉर्मूला y1 upper suffix 2, that means second approximation of y1 equals to y0 plus h by 2 into f of x0 y0 plus f of x1 y1, but instead of y1 here we take first approximation of y1. Okay, so second approximation of y1 is, so y0 है अपना 1 plus h by 2 की वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या तो फिर 0.05 upon 2 into f of 0,1 plus f of x1 is 0.05, first approximation of y1 कितना है 1.0525, and after calculations you will get value 1.0526. तो फिर मैं इस साइड में लिखती हूँ वैल्यू. Second approximation of y1 is 1.0526. So क्या हम यहाँ पर approximation stop करें? So if you observe value of first approximation of y1 and second approximation of y1,
So in first approximation value is 0.0525 and here it is 1.0526. So values are not equal. वैल्यूज अगर इक्वल मिलती है तभी जाके आपको अप्रोक्सीमेशन स्टॉप करना है, बट दिस टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल. दैट्स व्हाई वी परफॉर्म वन मोर अप्रोक्सीमेशन. सो थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1, that is again y0 plus h by 2 into f of x0 y0 plus f of x1 y1, बट यहाँ पर अब हम लेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन which is equals to y1 y0 is 1 plus 0.05 by 2 into f of 0,1 plus f of 0.05 comma, अब सेकेंड इटरेशन की वैल्यू है 1.0526 and after calculations your value of third approximation is, so third approximation of I1 is 1.0526. Now if you observe previous approximation and current approximations, values are exactly same, there is no difference, right? And that's why here we stop the approximations, and therefore approximate value of y, therefore approximate value of y at x equals to, हमने x के कौन सी वैल्यू के लिए सॉल्यूशन फाइंड किया है 0.05 के लिए, at x equal to 0.05 is y equals to 1.0526. बट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ y at x equals to 0.1. That's why it needed to perform one more iteration. Okay, so let's start second iteration. So second iteration में हमें क्या करना है? So to find value of y at x equals to 0.1. तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें जो वैल्यू मिली है, जो सॉल्यूशन मिला है ना, अब हमें जो सॉल्यूशन मिला है दैट विल बी आवर इनिशियल कंडीशन. स्टार्टिंग में फर्स्ट इटरेशन में हमने इनिशियल कंडीशन कौन सी ली थी? वैल्यू ऑफ x0 एंड y0. बट नाउ we consider this solution as a initial condition. So this is our x0 and this is our y0 और आपका h जो है h remain fixed. Okay, so now x0 is 0.05, y0 is 1.0526 and our h is fixed, that is h is equals to what? 0.05. Okay, so your x1, so आपकी x1 की वैल्यू आएगी x0 प्लस h. x0 कितना है अब? 0.05 and h is 0.05. अगर आप इन दोनों की एडिशन करते हैं तो आपको x1 मिलता है 0.1. ओके, नाउ वी फाइंड y1. तो y1 का फॉर्मूला है y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0. तो अब हमारी y0 की वैल्यू रखेगी दैट इज 1.0526 प्लस h के 0.05 प्लस इंटू एफ ऑफ x0 इज, अपना x0 कितना है यहाँ? 0.05 comma y0 is our 1.0526. अब अपना f of xy जो है, f of xy क्या है? x plus y. So here we get 1.0526 plus 0.05 into 0.05 plus 1.0526. And after calculations here we get 1.05
1077. So this is our value of y1. So यहाँ पर x1 is 0.1 और y1 मिलता है 1.1077. Now we take first approximation, है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेकेंड इटरेशन की, तो सेकेंड इटरेशन में भी हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं. तो हम चलते हैं अब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की तरफ. ओके, सो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और डायरेक्टली हम लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 को हम डिनोट करते हैं y1 अपर सफिक्स 1 एंड फॉर्मूला इज y0 प्लस h/2 into f of x0 y0 plus f of x1 y1 which is equals to y0 है अपना 1.0526 plus h is 0.0552 into f of x0 y0 that is 0.05 comma 1.0526 plus f of x1 y1 that is f of x1 है अपना 0.1 comma 1.1077. ठीक है. अब फिर से f of xy means what? x plus y means इन दोनों की एडिशन हो जाएगी, यहाँ पे भी इन दोनों नंबर्स की एडिशन हो जाएगी. सो आफ्टर कैलकुलेशंस value of this first approximation is 1.1103. So this is first approximate value of y1. Now we start second approximation. तो second approximation के लिए हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला नोट करेंगे. So second approximation of y1 is y0 plus h/2 into f of x0 y0 plus f of x1 y1. Now since it is second approximation, so here we use previous value of y1. तो अपनी previous value क्या है, हमने इसे डिनोट किया है like this. Okay. Now y0 is 1.0526 plus 0.05/2. यहाँ पे मिलेगा f of 0.05 comma 1.0526 plus f of x1 is 0.1 comma first approximation of y1 is 1.1103. So यहाँ पर हम कैलकुलेशंस करेंगे 1.0526 plus 0025 और यहाँ पर x plus y मीन्स इन दोनों की एडिशन हो जाएगी. So 0.05 plus 1.0526 प्लस फिर से यहाँ पर f of xy मतलब इन दोनों की एडिशन होगी क्योंकि अपना f of xy क्या गिवन है, f of xy is x plus y. ओके, सो यहाँ पर हमें मिलेगा 0.1 plus 1.1103. आफ्टर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस वैल्यू ऑफ दिस सेकेंड अप्रोक्सीमेशन इज 1.1104. अब हम ऑब्जर्व करेंगे अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन. सो वैल्यूज आर सेम अप टू 3 decimal places, but they are not exactly equal. Their difference is not 0. That's why we perform one more approximation. Okay, so third approximation of y1 is again y0 plus h/2 into f of x0 y0 plus f of x1 y1. बट थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हम यहाँ पर वैल्यू यूज करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की. सो विच इज इक्वल्स टू 1.0526
plus h by 2, then f of 0.05, 1.02526 plus f of x1 is 0.1, second approximation of y1 हमें मिला है 1.1104, and after calculations here you will get value 1.1104. आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, आपको y1 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 और थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ y1 इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है. मतलब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, देन यू विल गेट वैल्यू 0. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू अप्रोक्सीमेशंस, एंड दैट्स व्हाई दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. और हमने यहाँ पर जो सॉल्यूशन फाइंड किया है सेकंड इटरेशन में, दैट इज फॉर x इक्वल्स टू 0.1. और क्वेश्चन में भी आपको पूछा है कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर x इक्वल्स टू 0.1. तो आपको यहाँ पर h की जो टर्म है उसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ में आया होगा. और इनकेस आपको h गिवन है तो अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर देखा है कि h का क्या मैजिक हुआ है. यहाँ पर h आपको 0.05 गिवन था, दैट्स व्हाई हियर वी हैव परफॉर्म 2 इटरेशंस. बट अगर आपको h नहीं दिया रहता था तब भी क्या करना है, तो वो भी मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है. ओके, सो you can take precaution of h. Okay, so here finally I write the solution. Therefore required solution is y equals to 1.1104 and x equals to 0.1. That's it. So this is required solution. तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर होमवर्क के लिए देना चाहूंगी, और बल्कि मैं कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी. तो सेकंड एग्जाम्पल इज यूज मॉडिफाइड यूलर्स मेथड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y. मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेती हूँ. So question is using modified Euler's method find approximate value of y when x equals to 0.3. तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है at x equals to 0.3. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने y की वैल्यू फाइंड की थी at x equals to 0.1. दैट मीन्स y at 0.1, और हमें इसका आंसर कितना मिला था 1.1104. So you may write like this. ठीक है. सो हियर आवर एम इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ y एट 0.3. और मैंने यहाँ पर आपको आंसर देके रखा है. रिक्वायर्ड आंसर इज 1.404. बट यहाँ पर डाउट है कि वेदर हियर वी परफॉर्म सिंगल इटरेशन और वी परफॉर्म 2 इटरेशन. आपने 2 भी इटरेशन परफॉर्म किए तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, बट इन दैट केस आपको h पर फोकस करना होगा. नाउ सी, यहाँ पे सबसे पहले आप गिवन डेटा नोट करिए. तो हमें यहाँ पर dy by dx दे के रखा है. सो dy by dx कितना है x plus y. आप इसे कंपेयर करेंगे f of xy के साथ. दैट्स व्हाई हियर योर f of xy इज x plus y. We denote equation number 1. Also we have given initial condition. So here value of y is 1 when x equals to 0. So this is initial condition, y0 equals to 1 and x0 equals to 0. Okay. Now here it is asked to find value of y at 0.3. This is our aim. And h is not provided. जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको h प्रोवाइड किया हुआ था, but here h is not provided. So here we can decide whether we perform one single iteration or 2 iteration. अगर आप डायरेक्टली h लेते हैं तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको h मीन्स आपको y की वैल्यू कौन से x के लिए फाइंड करनी है 0.3 के लिए. So h is equals to this 0.3
माइनस x0, बट यहाँ पर x0 कितना है 0, सो यू मे डायरेक्टली टेक h इक्वल टू 0.3. अगर आप डायरेक्टली h की वैल्यू 0.3 लेते हैं तो आपको एक ही इटरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और अगर आप h की वैल्यू 0.3, अगर मुझे लगता है कि मुझे 2 इटरेशंस परफॉर्म करने हैं, 2 इटरेशंस परफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगी, इस 0.3 को डिवाइड कर दूंगी 2 को. अगर मुझे लगता है कि मुझे आंसर 3 इटरेशंस में चाहिए, लेकिन क्यों अपना वर्क एक्स्ट्रा का बढ़ाने. सो बेटर वे, h अगर नहीं दिया है सो यू कैन डायरेक्टली टेक h इक्वल्स टू 0.3 एंड यू स्टार्ट योर solution. Then you find x1, y1, then afterwards you can find first approximation of y1, second approximation of y1 and check their values. अगर दोनों की वैल्यू सेम मिलती है तो आपको थर्ड अप्रोक्सीमेशन करने की जरूरत नहीं है, बट इफ नॉट सेम देन यू परफॉर्म थर्ड अप्रोक्सीमेशन एंड चेक सेकंड एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन. अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो यू विल गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. Okay, so in this way you try its solution and its answer is also given here. So required solution is 1.4004. So I hope आपको ये मेथड समझ में आई होगी. फॉर्मूला आपने अच्छे से यहाँ पर रिकॉल करने होंगे आपको. ओके, और कैलसी तो अलाउड है. सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ डिफिकल्टी जा सकती है. ओके, so go through the procedure carefully and try to solve the examples. Okay, so with this I stop my video lecture. Thank you very much.